Hello students, today in this lecture we will discuss liquids at rest, and students we are going to start off with Pascal's law. Okay, Pascal's law for enclosed liquid. Okay, now Pascal's law for enclosed liquid. देखिए बेटा, जब कभी भी कोई भी लिक्विड एनक्लोज होता है, कंप्लीटली एनक्लोज लिक्विड की बात होती है, तो कंप्लीटली एनक्लोज लिक्विड में अगर किसी भी पॉइंट पर या किसी भी पार्ट में बेटा प्रेशर में कोई भी चेंज अगर प्रोड्यूस होता है, देन दिस चेंज इन प्रेशर गेट इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस इक्वली. ओके, क्लियर? now अब स्टेटमेंट नोट करें पहले. इट स्टेट्स दैट in an enclosed liquid, the change in pressure in any part of the liquid get equally transmitted throughout the liquid. अब ध्यान से देखिए बेटा, let us suppose as we are considering a system. Let us suppose it is the system. It is the system of pipes, and the system of pipes is provided with the frictionless and the movable pistons. Let us suppose that the piston which is present in this pipe, whose area of cross section is supposed to say A2, the area of cross section is supposed to say A2, and in this broader pipe, the movable piston is fitted, and the area of cross section of the movable piston, let us suppose it is A1. Suppose some liquid is enclosed within the system. Okay, take a look. We are considering a system of pipes. The pipes, they are connected with each other. One is the broader pipe and the other one is the narrower pipe. Okay, the pipes, they are provided with the frictionless and the movable pistons. The piston which is present in the narrower pipe, it has the area of cross section A2, and the piston which is present in the broader pipe, it has the area of cross section A1. And liquid is enclosed within the system. Okay, now let us suppose, the force F1 is exerted on the piston. That is, we are pushing the piston towards right. So to push the piston towards right, we are exerting the force say F1 on the liquid. Clear? Now due to this force F1, let us suppose say P1 is the pressure exerted by the piston on the liquid. Okay? Now by definition of pressure, this P1, it will be equals to F1 divided by A1. Now what will happen? Now sirs, the increase in pressure on the left side of the enclosed liquid, it will get transmitted throughout the liquid. That is, this increase in pressure will appear equally at every point in an enclosed liquid. Now what will happen when we are exerting the force on the piston? Then due to this force, the pressure is exerted on the liquid. Now this enclosed liquid, what it will do, it will exert the pressure, let us suppose say P2 on this piston. Got it, says? Now due to the pressure which is exerted by the liquid on this piston, the force, let us suppose say F2 is exerted by the liquid on the piston. Okay, sirs? Now the pressure P2 is written as the force F2 divided by A2. Now sirs, according to Pascal's law, this P1, it will be equals to P2. That is, the pressure, the change in pressure, or simply the increase in pressure on the left side of this enclosed liquid, it will be exactly equal to the increase in pressure in the right hand side of the liquid. Okay, now we can say if this P1 is equals to P2, this P1 equals to P2 is the Pascal's law. So we can say that this F1 divided by A1, it will be equals to F2 divided by A2. Okay, now we can say that this F1 divided by F2 is written as say A1 divided by A2. Now take a look.
Now since this area of cross section A1 is greater than the area of cross section A2, this A1 is greater than A2. This implies that this A1 divided by A2, it will be greater than 1. If this ratio is greater than 1, this implies that this F1 divided by F2 would be greater than 1. And if this F1 by F2 is greater than 1, then since this F1, it would be greater than F2. Clear? Now, in an enclosed liquid, from it we conclude that whenever we are having the enclosed liquid, the greater the area of cross section, greater is the force at that area of cross section. Smaller the cross section area, smaller is the force which is exerted by the liquid on that cross section. Now since it is basically mechanical advantage, and this mechanical advantage is used in hydraulic lift, in hydraulic brakes, in every hydraulic. Now since in hydraulic lift or in hydraulic brakes or in any kind of hydraulic system, there exists the enclosed liquid which is present inside the pipes, and the pipes, they are provided with the frictionless and the movable piston. Any amount of increase in the pressure in any part of the liquid, it will get equally transmitted throughout the liquid, due to which what will happen? The liquid will exert the same and equal pressure on the rest of the pistons which are present in the system. Okay, sirs? So let us study hydraulic lift first of all. Okay, hydraulic lift क्या होता है बेटा? आपने देखा होगा सर्विस स्टेशंस के अंदर हाइड्रोलिक लिफ्ट को यूज करते हैं टू लिफ्ट ऑफ द हेवी व्हीकल्स लाइक द कार्स. अब इन कार्स को हाथ से तो कोई ऊपर उठा नहीं सकता, तो बेटा हाइड्रोलिक लिफ्ट में ये मैकेनिकल एडवांटेज होती है, और इस मैकेनिकल एडवांटेज को यूज करके आप हैवी ऑब्जेक्ट जैसे कि कार्स, इनको इजीली उठा सकते हैं, वर्टिकल लिफ्ट दे सकते हैं. क्लियर? वर्टिकल लिफ्ट देने में जो फोर्स लगेगा दैट विल बी स्मॉलर देन द वेट ऑफ द कार. ओके, देखिए तो आप ऐसा करें, पहले ये पास्कल्स लॉ का कैलकुलेशन एक बार कॉपी करें. Now, so is hydraulic lift. This hydraulic lift is a setup. It is a setup which is used to lift up the heavy objects. नोट कर लें आप इस स्टेटमेंट को. और बेटा सेटअप में आपको दिखा रहा हूं, बेटा इस सेटअप में वर्टिकल कॉलम्स है, और वर्टिकल कॉलम्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है. वर्टिकल कॉलम्स है और वर्टिकल कॉलम्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है. बेटा these vertical columns, they are provided with the frictionless and the movable pistons. Let us suppose say A1 is the area of cross section of the piston which is present in this left side vertical column, and A2 is the area of cross section. A2 is the area of cross section of the vertical column which is present on the right hand side. Now again, the piston of area of cross section A2 is fitted in this vertical column. A liquid is enclosed in the system of pipes. Now take a look. These two vertical columns, they are connected with the side tube. Okay, and the heavy object which is to be lifted, it is placed on the piston whose area of cross section is larger. देखिए, let us suppose say it is the block which is quite heavy, and it is placed on the piston of larger cross section area. Okay, let us suppose say M is the mass of this block, and if this block is to be lifted, ध्यान से देखिए बेटा, block whose mass is M, the weight of the block is mg, which is vertically downward. If we want
that this block is to be lifted vertically upward, then since an upward force, say F, is to be applied on this block. Now this block can be lifted only when this F is greater than or equal to mg. When this F is greater than or equal to mg. Now since we have to just lift the block up. Okay, सिर्फ ब्लॉक को उठाना है. अगर अप्लाइड फोर्स F वेट से ज्यादा होगा तो ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा. क्लियर हो गई बात? हमें ब्लॉक को एक्सेलरेट नहीं कराना है, हमें सिर्फ वर्टिकली उसे उठाना है. जब हमें ब्लॉक को वर्टिकली लिफ्ट करना है तो इस केस में जो फोर्स होगा दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द वेट. ये बात समझ आ गई आपको? ओके, अब देखिए बेटा, हाइड्रोलिक लिफ्ट क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है सिस्टम ऑफ पाइप्स है, and the liquid is enclosed in the system of pipes. These pipes, they are provided with the frictionless and the movable pistons, and the principle of this hydraulic lift is simply Pascal's law. Pascal's law for enclosed liquids. Okay, it is the basic principle. अब देखिए, let us suppose say the force F1 is exerted on the piston whose area of cross section is say A1. Now due to this force F1, some pressure is exerted on the liquid. Let us suppose say the pressure P1 is exerted on the liquid when the force F1 is applied on the area of cross section A1. Okay, so in this left region the increase in pressure is P1. Now this increase in pressure P1, it can be written as F1 divided by A1. Now says this increase in pressure, it will get transmitted throughout the liquid. It will get transmitted throughout the liquid, and the liquid will exert the pressure P2. The liquid will exert the pressure P2 on the piston whose area of cross section is A2. Due to this pressure P2, the upward force, say F2, is exerted by the liquid on the piston. Okay, and if this upward force F2 is at least equal to the weight mg of this block, then this block, it can be vertically lifted. Okay, now say P2 is the pressure which is exerted by the liquid on the piston whose area of cross section is A2. So this pressure is written as say F2 divided by A2. Now since according to Pascal's law, this P1 is equals to P2, so we can say that this F1 divided by A1 is equals to F2 divided by A2. Got it, friends? Now we can say that this F2 is equals to, suppose say mg, the minimum required force to lift the block. So this F1 divided by A1 is written as say mg divided by A2. We can say that this F1 divided by mg is written as say A1 divided by A2. Okay, now clearly in the figure this A1 is less than A2. A1 is less than A2. So we can say that this A1 by A2 is less than 1. If this A1 by A2 is less than 1, then we can say that this F1 divided by mg, it would be less than 1. If this F1 by mg is less than 1, then this F1 is less than mg. So since to lift this heavy block, in the vertical direction, the force which is required, it is less than the weight of the block. Okay, sirs? तो यहां पर बेटा पास्कल्स लॉ से मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है जिसको हाइड्रोलिक्स में यूज किया जाता है. गॉट इट सिर्स? समझ आ गई बात? चलिए आप पहले इसको फटाफट कॉपी करिए. Now sirs, बेटा हाइड्रोलिक ब्रेक्स ये आपने बुक से खुद से प्रिपेयर करना है. बहुत सिंपल है. मैं एक बारी ब्रीफ में फिर भी एक्सप्लेन आपको कर देता हूं.
हाइड्रोलिक ब्रेक्स। देखिए स्विंग्स व्हीकल्स में जैसे कार्स, ट्रक्स, बेटा टायर होता है। टायर जिस आयरन बॉडी पर फिटेड होता है उसको बोलते हैं रिम। ठीक है, तो स्विंग्स लेट अस सपोज से इट इज द रिम और रिम के ऊपर टायर फिटेड होता है। गॉट इट? अब स्विंग्स बेटा ये जो रिम होता है, रिम के अंदर होते हैं ब्रेक शूज। रिम के अंदर होते हैं ब्रेक शूज। फ्रेंड्स ये होते हैं ब्रेक शूज। ओके, दीज आर द ब्रेक शूज। और इन ब्रेक शूज को, these brake shoes, they are connected with a spring. Okay, it is the spring says. अब देखिए बेटा, यहां पर ये लिक्विड एनक्लोज है, ये लिक्विड एनक्लोज है और यहां पर पिस्टन्स P1 और P2 एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब के एंड्स पर कनेक्टेड होते हैं। ब्रेक शूज इन पिस्टन्स के साथ फिटेड होते हैं। बेटा ये होता है ब्रेक पेडल। ब्रेक पेडल। अब बेटा देखिए, ये जो वर्टिकल ट्यूब के साथ एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब आपको कनेक्टेड दिखाई दे रही है, ये यहां पर क्लोज होती है, एनक्लोज लिक्विड है। अब बेटा अगर जब ब्रेक्स लगाए जाते हैं तो ब्रेक पेडल को पुश किया जाता है। तो बेटा ब्रेक पेडल पर फोर्स लगाया, जिसकी वजह से ये जो आपको पिस्टन दिखाई देगा, इस पिस्टन पर स्वेंस फोर्स लगेगा। फोर्स लगने की वजह से यहां पर प्रेशर जनरेट होगा। सपोज से P इज द प्रेशर विच इज जनरेटेड ओके ओवर दिस पिस्टन। तो स्वेंस ये जो इंक्रीज इन प्रेशर है, ये थ्रू आउट द लिक्विड ट्रांसमिट होगा। तो ये प्रेशर P आपको यहां पर दिखाई देगा। तो इस प्रेशर की वजह से इन पिस्टन्स पर बेटा आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये जो ब्रेक शूज है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे और स्विंग्स ये फिर टायर को अंदर की साइड से रब करेंगे। मतलब ये ब्रेक शूज ऐसे करके स्ट्रेच होंगे, रिम को अंदर की साइड से रब करेंगे मींस ब्रेक्स लगेंगे। गॉट इट स्विंग्स? और जब ब्रेक पेडल रिड्यूस होगा तो जो इंक्रीज इन द प्रेशर था वो खत्म हो चुका है। जब इंक्रीज इन द प्रेशर खत्म हो जाएगा तो यहां पर भी प्रेशर खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो स्प्रिंग स्ट्रेच हो चुका था, जब ब्रेक शूज बाहर मूव कर रहे थे तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया। अब स्प्रिंग के अंदर बेटा पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगा। तो स्प्रिंग जब ब्रेक पेडल रिलीज किया तो ये स्प्रिंग वापस अपना ओरिजिनल लेंथ रिगेन करेगा, जिसकी वजह से ब्रेक शूज वापस आएंगे और रिम के साथ इनका कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो इस तरीके से स्विंग्स सारे हाइड्रोलिक ब्रेक्स काम करते हैं। क्लियर हो गई बात? ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है स्विंग्स, ये आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? अब बेटा बात करते हैं बॉयंट फोर्स की। देखिए बॉयंट फोर्स, लेट अस सपोज इट इज द कंटेनर और बेटा कंटेनर के अंदर लिक्विड प्रेजेंट है। लिक्विड हमने यहां पे फिलअप किया हुआ एंड लेट अस सपोज इट इज अ स्फीयर, it is the, let us suppose say the solid sphere, say the iron sphere, it is the
आयरन स्फीयर। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर इस आयरन स्फीयर को इस लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं तो क्या होगा? आयरन स्फीयर को अगर हमने लिक्विड के अंदर इमर्स किया, देन व्हाट विल हैपन? देखिए, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये जो शेडेड पोर्शन है और ये जो शेडेड पोर्शन है, यहां पर मैं बोल रहा हूं द शेडेड पोर्शन इज सिंपली द वॉल्यूम ऑफ द आयरन स्फीयर। ओके, अब बेटा जब इस आयरन स्फीयर को इस लिक्विड के अंदर इमर्स किया जाता है तो ये आयरन स्फीयर अपने वॉल्यूम के इक्वल वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा। तो यहां पर जो मैंने शेड किया है, मैं बोल रहा हूं कि यहां पर इस शेडेड पोर्शन में जो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एग्जिस्ट करता था, यहां से स्फीयर ने उस लिक्विड को डिस्प्लेस किया। तो लिक्विड अगर डिस्प्लेस हुआ तो स्टूडेंट्स लिक्विड लेवल इट विल गेट राइज्ड। गॉट इट स्टूडेंट्स? ये बात समझ आ गई? तो स्टूडेंट्स यहां पर मैंने इस पोर्शन को भी शेड किया। गॉट इट? तो इस पोर्शन को शेड किया, इसको हमने बोला इट इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड displaced. It is the volume of the liquid displaced. अब बेटा ध्यान से देखिए, तीनों शेडेड पोर्शंस का जो वॉल्यूम है वो एग्जैक्टली सेम है। आयरन स्फीयर कंप्लीटली लिक्विड के अंदर इमर्स है, तो वी कैन से फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इनसाइड द लिक्विड। गॉट इट? पहला पॉइंट, वॉल्यूम of liquid displaced it will be equals to the volume of the immersed part of the body in the liquid। पहला बेसिक क्लियर हुआ। ओके, अब दूसरे नंबर की बात ध्यान से सुनिए बेटा, जब ये स्फीयर लिक्विड के अंदर इमर्स है तो बेटा दो पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं। स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर के अंदर हमने किया था कि बेटा जब लिक्विड इक्विलिब्रियम में होता है तो जितना ज्यादा डेप्थ होता है लिक्विड का प्रेशर उस डेप्थ पे उतना ज्यादा होता है। तो ध्यान से समझिए, तो स्टूडेंट्स इस बी पॉइंट के ऊपर लिक्विड का जो प्रेशर है दैट इज सपोज से P2 और इस पॉइंट ए पर लिक्विड का जो प्रेशर है दैट इज सपोज से P1। नाउ क्लियरली स्टूडेंट्स दिस P2 इज ग्रेटर देन P1। ओके, बात समझ आई? तो ये जो लिक्विड है ये इस स्फीयर के ऊपर बेटा फोर्स लगाएगा F2 इस डायरेक्शन में, और लिक्विड पॉइंट ए के ऊपर जो फोर्स लगाएगा, लिक्विड पॉइंट ए पर जो फोर्स लगाएगा दैट विल बी F1 व्हिच इज वर्टिकली डाउनवर्ड। अब क्योंकि बेटा प्रेशर P2 इज ग्रेटर देन P1, सो वी कैन से दैट दिस फोर्स F2 इज ग्रेटर देन F1। द फोर्स F2 इज ग्रेटर देन F1। अब बेटा इन दोनों फोर्सेस में जो डिफरेंस होगा that is the net force exerted by the liquid on the sphere in the vertically upward direction. So students, let us suppose say FB is the difference between these two forces, say F2 and F1. So this buoyant force F2 minus F1. So beta, it is the net force which is exerted by the liquid. It is the net force exerted by the liquid on this immersed sphere, and its direction it will be vertically upward. So in this case we can say, let us suppose it is the sphere. It is the sphere which is completely immersed inside the liquid. तो बेटा इस स्फीयर ने अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्सपीरियंस किया उसको कहते हैं buoyant force। समझ आ गई बात? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स buoyant force का डेफिनेशन लिखें। It is the upward force exerted by the liquid on the body which is completely or partially immersed in the liquid,
which is completely or partially immersed in the liquid. बात समझ आ गई? Students, आपने पहले इस फिगर को कॉपी करना है, बॉयंट फोर्स FB को मार्क करना है, ठीक है? नेक्स्ट लाइन में लिख लें FB बी द बॉयंट फोर्स. अब बेटा ये बॉयंट फोर्स होती किसके इक्वल है? बॉयंट फोर्स हमेशा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के इक्वल होती है. तो आप स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन में लिखें द बॉयंट फोर्स is always equal to the weight of the liquid displaced. Okay? मान लेते हैं सर कि बेटा से rho be the density of the liquid. Let us suppose say first of all this FB be the buoyant force. This FB it will be equals to the density of the liquid is rho. Let us suppose say V is the volume of the liquid displaced multiplied with G. So since this FB is simply equal to the weight of liquid displaced. Weight of liquid displaced. Okay? Clear? This rho is the density of the liquid. This V is the volume of the liquid displaced. और वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इज ऑलवेज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इन द लिक्विड. गॉट इट सर? सो दिस इज ऑल अबाउट बॉयंट फोर्स. गॉट इट? बॉयंट फोर्स किसकी वजह से होता है? बॉयंट फोर्स प्रेशर डिफरेंस इन द लिक्विड की वजह से होता है. समझ आ गई ये बात? ओके? होता मैग्नीट्यूड वाइज कितना है? हमेशा इतना होता है. द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस. बॉयंट फोर्स का इमर्स्ड बॉडी के वेट से कोई लेना देना नहीं होता. बॉयंट फोर्स हमेशा कैलकुलेट किया जाता है बाय द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस. और वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस किस पर डिपेंड करेगा? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस हमेशा वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द सॉलिड बॉडी पर डिपेंड करेगा, या यूं कहें कि वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस पर डिपेंड करेगा. तो आप एक बार कॉपी कर लें. यस सर. अब बेटा बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल. तो स्टूडेंट्स अब बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल. और ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके? ये कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्लियर? अब ध्यान से देखें. आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझिए पहले. लेट अस सपोज स्टूडेंट्स let us suppose it as a container. इस कंटेनर के अंदर हमने एक लिक्विड को फिलअप किया. लिक्विड का डेंसिटी लेट अस सपोज से सिग्मा. दिस इज द आयरन स्फीयर whose volume is a capital V and rho is the density of this iron sphere. It is the iron sphere. When this iron sphere is present in air, बेटा जब ये आयरन स्फीयर एयर में प्रेजेंट है, in air, let us suppose say m be the mass of this iron sphere. So since in air we can say that the weight of the iron sphere is say mg. This mg will be the true weight of this iron sphere. It is the true weight of iron sphere. Got it, friends? That is the weight of the body in air. That is the weight of the body in air. Now, what will happen? When this iron sphere is completely immersed inside the liquid. देखिए, when this iron sphere is completely immersed inside the liquid, now the forces which are acting on the iron sphere are, first one is the true weight mg,
It is the true weight of the iron sphere. Second one would be the buoyant force Fb. Now this buoyant force Fb, it is just opposing the true weight of the iron sphere. तो since जब आयरन स्फीयर को लिक्विड के अंदर इमर्स किया तो buoyant फोर्स लगा. buoyant फोर्स वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जिसकी वजह से नेट फोर्स ट्रू वेट से तो पक्का कम होगा. ओके, अब बेटा ये नेट फोर्स ट्रू वेट से कम है. इट विल बी द वेट ऑफ द आयरन स्फीयर इनसाइड द लिक्विड. इट विल बी द weight of the iron sphere inside the liquid. Got it, sense? Now let us suppose say that capital F be the net force on this iron sphere which is completely immersed inside the liquid. Okay, so this F is given the name, this F is the net force on the immersed iron sphere. Got it, sense? तो यहां पर जो हमें कैलकुलेशन दिखाई दे रही है, जब इसको वर्ड्स में डालेंगे, वर्ड्स में डालने पर ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल. तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि बेटा कोई भी बॉडी जो कि कंप्लीटली या पार्शियली इमर्स है लिक्विड के अंदर, उस बॉडी के ऊपर बॉइंट फोर्स लगेगा. ये बॉइंट फोर्स बॉडी के वेट को अपोज करेगा, जिसकी वजह से बॉडी का वेट लिक्विड में हमेशा एक्चुअल वेट या ट्रू वेट से कम होता है. मतलब बॉडी अपना वेट लूज करती है. बेटा वेट लूज करती है, मास लूज नहीं करती है. समझ आ गई बात? तो स्टेटमेंट लिखें यहां. इट स्टेट्स दैट व्हेन द बॉडी इज कंप्लीटली और पार्शियली इमर्स्ड, when the body is completely or partially immersed in the liquid, it loses some of its weight. It loses some of its weight, and the loss in weight of the immersed body is equal to the buoyant force exerted by the liquid on the immersed body. Okay, friends? अब ध्यान से मेरी बातें सुने. नेक्स्ट लाइन में लिखें. Say mg is the true weight of the immersed body. Immersed body, okay, that is the weight in air. Weight in air, okay, where this m is the mass of the iron sphere and it is the density multiplied with the volume. So this rho is the density of the iron sphere, v is the volume of the iron sphere, this Fb is the buoyant force, okay, and this capital F, which will be equals to mg dash, is the apparent weight of the immersed body in the liquid. Got it, sense? बात समझ आ गई? यहां पर ये जो जी डैश है, जी डैश को क्या बोलेंगे? जी डैश विल बी द एक्सेलरेशन of the immersed body in the liquid. Got it, sense? तो आप पहले कैलकुलेशंस एक बार कॉपी करें. अभी इसके आगे कंटिन्यू करना है हमने. कॉपी करिए.
Nassars, अब ध्यान से देखिए बेटा कैलकुलेशन को। बेटा बॉयंट फोर्स लिक्विड ने स्फीयर पे लगाया, mg वॉज द ट्रू वेट ऑफ द आयरन स्फीयर, आयरन स्फीयर कंप्लीटली इमर्स हमने कंसिडर किया है। सो द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वेट, difference between the true weight, this F is the difference between the true weight minus the buoyant force. So this F is written as, say, mg minus sigma is the density of the liquid. Iron sphere completely immersed tha, so volume of the iron sphere, it will be exactly equal to the volume of the liquid displaced. Say V be the volume of the liquid displaced, or simply the volume of the iron sphere. Got it? And this F is written as, say, mg dash. बोला जा चुका है, this F equals to mg dash is the apparent weight of the immersed body in the liquid. और simple words में बोले, it is the weight of the body in the liquid. Now this mg dash is written as, say, mg minus sigma into V into G. Okay? This mass m, it was the density multiplied with the volume. बेटा स्फीयर कंप्लीटली इमर्स था, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस दोनों इक्वल है. So we can write this as, say, rho into, say, V into, say, G dash. It is equals to rho into, say, V into, say, G minus sigma into, say, V into, say, G. Got it, sirs? G dash acceleration of the immersed iron sphere है in the liquid. So we can say, sirs, that V is made common. It is rho minus sigma. G is made common. G is the acceleration due to gravity. It is rho into, say, V into, say, G dash. This V cancelled out. So this G dash is written as, say, it is rho minus, say, sigma divided by, say, rho multiplied with small g. Got it, sirs? So it is the relationship between the acceleration of the immersed body in the liquid and the acceleration due to gravity. Okay, sirs? Got it? पहले आप यहां तक ये पूरी कैलकुलेशन एक बारी कॉपी करें. यस फ्रेंड्स, डन. अब हम कुछ केसेस की बात करेंगे. देखेंगे कि बॉडी कब फ्लोट करेगा, कब फ्लोट नहीं करेगा, अगर फ्लोट करेगा तो कैसे फ्लोट करेगा. Now cases. Case first, when this rho is greater than sigma. When this rho is greater than sigma, मतलब बेटा इमर्स बॉडी का जो मटेरियल है उसका डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा है. Then this rho minus sigma is positive. If this is positive, then since this G dash and G, they are in same direction. They are in same direction. That is, the body will accelerate to the bottom of the liquid. That is, it will sink to the bottom of the liquid. Body will sink to the bottom of the liquid. Got it, sirs? Now the case second, when this rho is equals to sigma. बेटा इमर्स बॉडी का जो मटेरियल है उसका डेंसिटी और लिक्विड का डेंसिटी अगर इक्वल है तो देखते हैं क्या होता है. This rho minus sigma, it will be equals to 0.
In this case, this G dash, it will be equals to 0. तो बेटा अगर बॉडी किसी भी तरीके से अगर पहले कंप्लीटली इमर्स था, तो अब वो बॉडी एक्सलोरेट नहीं करेगा, या तो बॉडी रेस्ट पर रहेगी या फिर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। बात समझ आ गई? अगर बॉडी पहले मूव कर रही है तो कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहेगी, बॉडी अगर पहले रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी। ओके, और यू कैन से कि बॉडी सस्पेंडेड रहेगी लिक्विड के अंदर और फ्लोट करेगी। बॉडी remains suspended in the liquid and floats. बात समझ आ गई? क्लियर? मतलब the body is at rest. Got it, friends? अब थर्ड केस ध्यान से देखिए। Now the case third, when this rho is less than sigma. When this rho is less than sigma, जैसे बेटा टेबल टेनिस वाला आपने बॉल देखा है, स्फीयर के अंदर एयर एनक्लोज्ड है। अगर कोई हाथ से टेबल टेनिस वाले बॉल को पकड़े और बकेट ऑफ वाटर के अंदर इमर्स करे, इमर्स करने के बाद जैसे ही छोड़ा जाता है तो बेटा ऑब्जर्व करते हैं कि टेबल टेनिस वाला बॉल इट राइजेस टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। ओके, देखिए, this rho is less than sigma, then this rho minus sigma is negative. That means that G dash and G are in opposite directions. Okay, that is, when the immersed body is released, the body will accelerate to the free surface of the liquid. When the immersed body is released, it accelerates to the surface of the liquid and it floats. और ये जो फ्लोट करेगी इसका बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम लिक्विड के अंदर इमर्स होगा। गॉट इट फ्रेंड्स? बात समझ आ गई? सो फ्रेंड्स, यहां पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल कंप्लीट होता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिमेनिंग सेक्शन ऑफ लिक्विड्स एट रेस्ट। और जो रिमेनिंग सेक्शन है वहां पर सरफेस टेंशन पहले नंबर पे, उसके बाद सरफेस एनर्जी इन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। ओके, सो ये बचा हुआ सेक्शन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे।